My camera on only, no? Yes, yes, no, the live is done. Hello everyone and welcome to our another live stream with Pick, right? So we have another renowned guest, Mr. Anupam Bajpai. So let me just give you all a brief introduction about Mr. Anupam. So he is having a 7+ year of experience in the stock market field, and he is also having an MBA degree in the finance sector. And during his even school time, he was very passionate, about learning the trading, how to do trading, and all these things. So he started his journey from that day onwards. Then he mastered those things in the field of a technical and fundamental analysis, and later he taught those skills to all the aspiring traders. So he is also well known for his innovating marketing insights, and as well as he helps other to grow in the stock market field. So thank you Anupam sir for joining today, and I hope आज का जो हमारा लाइव सेशन है, हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबको इससे बहुत सारे बेनिफिट मिले। और मेरा आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जो भी कंसर्न है, you can ask to Anupam sir. He will definitely help you in that. So Anupam sir, now platform is all yours. Yeah. Firstly, I would like to thank the Pickrate platform for giving me the opportunity to share my views on this platform. And yes, thank you Divyansh also for giving me this opportunity. Basically, today we are going to discuss about the basic of technical analysis and the strategy which is made by the multiple moving average, and when the stock price crosses the moving average, how we have to predict it, or how it is going to give us the buy or the sell signal. Um, Let me share you my screen. Yes. So to start with, basically we are going to start with the meaning of technical analysis, or we may say that we should first discuss the word analysis. In the stock market, basically analysis are of two types. One is technical analysis and the another one is fundamental analysis. The main core difference between the technical and fundamental analysis is their term. We may say their term. In fundamental analysis, we are basically going to make the analysis of long term. Fundamental analysis is for long term, and technical analysis is for short term. Let me first discuss about the fundamental analysis and the topics which we used to cover in fundamental analysis. In fundamental analysis, basically we used to go through the annual report of a company, in which we include learning of the profit and loss statement, balance sheet, cash flow, various ratios of the cash flow. Basically, we used to see that the company has enough current assets in comparison with its current liability, the depth of the company is making profit or loss, or basically the overview of the company, or we may say the fundamental or the financials of the company. For an example, if a company is performing very well, the profit of the company is increasing, the company is almost debt free, the cash flow of the company is very good. That means the company has sufficient amount of cash available. Company has sufficient current assets in comparison with its current liability. So we may assume, or we may predict that the stock price of the company will go up. We may predict that the stock price of the company will go up. But when it is going to rise, the basic answer to this will be in long term. Simply, in long term, we may say that the stock price of the company should rise because the company is having good financials or the good fundamentals.
Now, in technical analysis, we only focus on short term. Now, what is the proper definition? The simple and the proper definition of the technical analysis, we may say, in technical analysis, we usually we are forecasting the future price. We are forecasting मतलब भविष्यवाणी करना. Basically, we are forecasting the future price on the basis of previous price movements. पूरे टेक्निकल एनालिसिस के डेफिनेशन में मैंने सिर्फ एक ही टेक्निकल वर्ड यूज करा था, वो है प्राइस. सो इन दिस we may say that in technical analysis we used to ignore the financials of a company. While doing technical analysis, I am not going to see balance sheet of the company, I am not going to see the profit and statement of the company, I am not going to look after the cash flow of the company. I am just going to focus on the price of that particular stock and how that price has reacted in the near future. For an example, if a particular company has taken support, a particular company price has taken support in at a particular level. If that price comes to that point today, so I am going to assume that today also it is going to take support and the price will rise. If it's going to break, what will happen? We will look after it. Basically, the technical analysis is for short term. Now, what are the steps to learn technical analysis and how we can learn technical analysis? It's another topic to be discussed. Let me clear the steps to learn technical analysis. Basically, technical analysis is a huge subject to learn and it needs a lot of time and effort to have a command on it. What are the steps and how a person can continue learning it, or whatever we may say? So according to me, a person who wants to learn technical analysis should start with a very basic, like a person should start with a concept like support and resistance, learning about volumes. Then he should step about learning candlesticks, then candlestick patterns. Then he should go for chart patterns. After learning chart pattern, he should go for indicators. And after learning various indicators, the person should then focus on strategy. Our today's main topic is moving average strategy. Before discussing it, I would like to discuss about strategy and what does the strategy mean in technical terms. So basically in strategy is nothing but the combination of various indicators. When we used to combine various indicators, जब हम लोग एक से ज्यादा indicators को एक साथ देखते हैं, जब हम various indicators को combine करके देखते हैं, तो हम उसको वर्ड क्या दे सकते हैं? स्ट्रेटेजी दे सकते हैं. या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जब हम वेरियस कंसेप्ट्स को एक साथ में पर्टिकुलर ग्राफ पे अप्लाई करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी बोलते हैं. बेसिकली स्ट्रेटेजी की स्टेप्स क्या होती है? स्ट्रेटेजी की स्टेप्स ये होती है कि आपको बाइंग या सेलिंग इंडिकेट होगा, उसके बाद में आपको कंफर्मेशन मिलेगा. आफ्टर गेटिंग द कंफर्मेशन यू आर गोइंग टू एंटर दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी. ठीक है. It is basically combinations of various indicators like RSI, moving average, Bollinger Band, statistics, percentage R, etc., etc. What today we are going to discuss? So today we are going to discuss about the moving average strategy. Simply, first we are going to see what is moving average. So moving average is basically an indicator. Moving average is an indicator. Moving average is an indicator. One question यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि आपने बोला था कि जब हम कोई भी स्ट्रेटेजी देखते हैं तो हम क्या करते हैं? वेरियस इंडिकेटर्स को कंबाइन करते हैं. और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, इसमें तो सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, वो है मूविंग एवरेज. सो इन मूविंग एवरेज व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू कंबाइन मल्टीपल मूविंग एवरेजेस. लाइक आई एम गोइंग टू सी one or two multiple period moving averages, and as per their crossover we are going to predict that we have to buy or we have to sell. Now let us understand what is moving average. Simply, the moving average is one of the most commonly used indicators. There are basically two types of moving average. First one is simple moving average and the second one is exponential moving average. What is simple moving average? The word average here means that basically what the average means, we are calculating the mean, we are calculating the center value, or we are calculating the sum value of the particular closing prices of a particular security. It is formed by computing mean price of a security over a specific period of over a specific number of period. For example,
We are taking, I'm just taking it as example. The closing price of a particular security for 5 days. The closing price of a particular security for 5 days. I am calculating moving average of only for 5 days. The closing price of a particular security for 5 days. On first day it is 10, 11, 12, 13, and there is some plus 14. Okay. The closing price of a particular security for 5 days. Once 10, 11, 12, 13 and 14. The sum total of it is 60. We are going to divide it by 5 because we are calculating the mean price of 5. So it will be 12. On the next day, what we are going to do? We are going to avoid 10 and we are going to include the next day closing price. That is 11, 12, 13, 14 and 15. That will be 65 upon 5. It will be 30. So how the moving average is going to apply on the chart? One thing, the moving average used to apply on the chart only. So this price will be 12, means this price will be 12 and this price will be 13. Like this, it is going to be displayed on the chart. Practically, we are going to see after it. It is simply the simple moving average. I have shown you the calculation for better understanding. It doesn't need to understand. Now, the second one is exponential moving average. Basically, the exponential moving average, the calculation of the exponential moving average is harder than the simple moving average. We may say one thing, it is more accurate than the simple moving average. या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमने क्या करा था, सिंपल मूवी एवरेज पे फिल्टर लगा दिया जिससे हमको एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज मिल गया, जिसका कैलकुलेशन सिंपल मूवी एवरेज से थोड़ा सा टफ होता है और उसकी एक्यूरेसी सिंपल मूवी एवरेज से ज्यादा होती है. So if you have to prefer between the simple moving average and exponential moving average, simply go for exponential moving average. अब हम इसमें एक चीज ये देखते हैं कि इसके पर्टिकुलर यूजेस क्या होते हैं या हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, सबसे बेसिक इसका पहला यूज होता है, इट इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स. ये हमको ट्रेंड बताता है. ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं? ट्रेंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज. इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं क्योंकि ये चीज फिर बाद में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज. अप ट्रेंड, downtrend and sideways. Simply in uptrend the share price used to go, share price rises. In downtrend the share price falls, and in sideways what happens? A particular range is created and the share price used to move between these two ranges. The lower line is known as support line and upper line is known as resistance line. Now how to make it? It would be a practical part and we don't have time to discuss it. We will discuss it in the next session. So the moving average is helpful to us for identifying the trends. Main thing, it signals buy or sell when the share price crosses the moving average. First strategy, when the share price crosses the moving average, and the second strategy will be when one moving average crosses the another moving average. And the third one is there are simple strategies of multiple moving average like 5 and 20, 20 and 100, 4, 9, 19, etc. One more thing, 200 moving average act as a very good support and resistance. I am going to practically show it. Now, let us discuss our first thing. For example, this is a moving average. Or we may say, if we are going to go deeper in it, I may say it is 200 moving average. The first thing that I have discussed is about the strategy is when signals buy or sell when the price crosses the moving average. Simply what we are going to do, we are going to just keep one single moving average. That is our 200 moving average. The period may be different. I am taking an example of 200 moving average. One thing I have discussed that when the share price crosses 200 moving average. For an example, the share price, like we are going to use the candlestick. This type of candlestick, it has given its closing about 200 moving average. What is indicated here? Basically buying is indicated.
I'm practically going to show it, no issue. Basically, buying is indicated here, and the share price will rise from it. How to use it, when not to use it, when to use it, and when to enter, when to exit, that I am going to practically show it. I am just making base of it. And the second strategy is when one moving average crosses another moving average. Let us understand with this example, like I am using multiple moving averages of 5 and 20. I am just taking two moving average. First moving average is of period 5 and the second moving average is of period 20. For an example, this is my moving average, this is my 20 moving average. Okay, this is my 20 moving average. When the 5 moving average is going to cross the 20 moving average in upward direction. The 5 moving average is going to cross the 20 moving average in upward direction. What would be indicated here? Simply buying will be indicated. Simply buying will be indicated. We are going to practically see it. Simply buying will be indicated. And the second, when the 5 moving average crosses the 20 moving average in downward direction. So here what is going to be indicated? Simply selling will be. This moving average is 20 and this moving average is 5. Let me combine all the concepts. First thing, first we have learned when the share price crosses moving average. This is our 200 moving average and the share price crosses moving average. Then what is indicating buying or selling is indicated. And in the second one, when one moving average crosses the another moving average. Now, in the multiple moving average, what we are going to do? Simply we are going to take the base whose period is bigger or larger. Like in for example, for 5 and 20, the 20 is bigger than 5. So the 5 moving average, always the 5 moving average is going to cross 20 moving average. Never 20 moving average will be crossing 5 moving average. 5 moving average will cross 20 moving average. If 5 moving average crosses the 20 moving average in upward direction, buying will be indicated. If 5 moving average is going to cross 20 moving average in downward direction, selling will be indicated. Now, let us discuss it practically. If any doubt is there, you may ask it. Okay. I have taken the graph of Nifty 50. One more thing, you can apply this particular strategy in multiple companies graph. I have taken of Nifty 50. Means you can apply, you are free to apply it to any company graph. Okay. Like what we have discussed, like this. Let me highlight it. I have taken 5 moving average and 20 moving average. Our 20 moving average is of dark and is of pink shade. Okay. Now, what we have discussed that always the smaller moving average. In this case, the smaller moving average is 5 and larger moving average is 20. In all the cases, the smaller moving average is going to give crossover to the larger moving average. For an example, here, 5 moving average has crossed 20 moving average in upward direction. What is indicated at this point? Simply at this point, buying is indicated. At this point, buying is indicated and the share price has moved upward, like this. It was the buying opportunity and the share price has moved to this. Or we may say that it has further gone. Let us understand it by one more example. Like this. Very good example is that.
5 moving average has crossed 20 moving average in upward direction. At this point, what the thing is indicated? Simply buying is indicated at this point. We are going to enter the share price here. We are going to enter Nifty 50 here, and the share price has gone in a huge uptrend is seen in the share price like this. One more thing. Small this is C. Simply, this case also. The 5 moving average has crossed the 20 moving average in upward direction. Again, at this point, what is indicated? Simply buying is indicated at this particular point, and the share price has gone upward. One more thing, like here, simply 5 moving average has crossed 20 moving average. In which direction? In upward direction, but a huge fall is not seen. This particular situation, we used to know is a basically the dummy crossover is given. यहाँ पे हमको गलत क्रॉसओवर दिया गया था. ऐसे केस में आपको क्या करना है और आइडेंटिफाई उसको कैसे करना है कि जो क्रॉसओवर है वो सही है कि नहीं है, हम उसको देखते हैं. लाइक दिस 5 moving average has crossed the 20 moving average in upward direction. What is indicated here? Simply buying is indicated here. Simply buying is indicated. Simply buying is indicated. अब यहाँ पे क्या हुआ? 5 मूवी एवरेज है 20 मूवी एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, उसके बाद में इंडिकेट क्या हुआ? बाइंग इंडिकेट हुआ. बट यहाँ पे जो शेयर प्राइस था वो वापस से नीचे आ गया और उसमें हम बेसिकली अगर यहाँ पे एंटर करते हैं, हम लोग एंटर का करते इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंटर करते, फिर शेयर प्राइस गिर जाता, चांसेस है कि हमको इस पर्टिकुलर चीज पे क्या हो जाता? लॉस हो जाता. तो इसमें सबसे मेन चीज ये है कि जब भी हम ये क्रॉसओवर को सीन करें, व्हेनेवर वी यूज्ड टू सी द क्रॉसओवर, हमको ये देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल हमेशा 20 मूविंग एवरेज से दूर जानी चाहिए. नेक्स्ट कैंडल मैं वापस रिपीट करता हूं, आफ्टर द क्रॉस ओवर द नेक्स्ट कैंडल शुड मूव अवे फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज. एक बार इसको प्रैक्टिकली हम लोग इसमें देखते हैं जो हमने अभी तक बनाए थे. लाइक दिस, simply the 5 moving average has given its crossover to 20 moving average in upward direction. When we are going to enter, we are going to enter on the next candle. For an example, on 4th September, the crossover is given. We are going to enter on the 5th September when the candlestick of the 5th September move away from 20 moving average. ये इससे दूर जाना चाहिए. देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे. हम लोग कब एंटर करेंगे? नेक्स्ट डे एंटर करेंगे. नेक्स्ट डे भी हम कब एंटर करेंगे? जब जो कैंडल स्टिक है वो हमेशा 20 मूविंग एवरेज से दूर जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको डमी क्रॉसओवर मिलेंगे. फॉर एन एग्जांपल हम इसका जस्ट पास में देखें. यहाँ पे क्या हुआ था? 5 मूविंग एवरेज ने 20 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर किया था. तो 5 मूविंग एवरेज हैज गिवन इट्स क्रॉसओवर टू 20 मूविंग एवरेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन का वो हो गया था. हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे. जिस दिन क्रॉसओवर मिलेगा उस दिन एंटर नहीं करेंगे. हम लोग टाइम फ्रेम क्या रख रहे हैं? यहाँ पे 1 डे के रख रहे हैं. हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे. अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा था? द कैंडल स्टिक इज नॉट मूविंग अवे फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज. ठीक है, अगले दिन जो कैंडल स्टिक है वो 20 मूविंग एवरेज से दूर नहीं जा रही है बल्कि उसके और पास में आ रही है. तो हम लोग क्या करेंगे? हमको तभी समझ जाना है कि इट इज अ डमी क्रॉसओवर एंड वी आर गोइंग टू अवॉइड सच ट्रेडिंग. जैसे यहाँ पे भी 5 मूविंग एवरेज ने 20 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटा था. इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पे हम लोग एंटर नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे. नेक्स्ट डे हमने क्या देखा? एक रेड कैंडल स्टिक बनी जो कि 20 मूविंग एवरेज के करीब आ रही है, दूर नहीं जा रही है. हम लोग यहाँ पे भी एंटर नहीं करेंगे. इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? बेसिकली इट इज डमी क्रॉसओवर. व्हाट वी सेड, इट इज अ डमी क्रॉसओवर. ठीक है, जैसे एक हम लोग डाउन ट्रेंड का देखते हैं. जैसे ये हो गया, इसके बाद में क्या हुआ? वो उससे दूर जा रही है. हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर इसको एक मेजर क्वेश्चन इसमें काफी लोगों को ये आ रहा होगा कि वी आर
सिंपली देखो, वेन टू एग्जिट में एक चीज बताओ, हफ्ते यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज करा है वो सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करा है, दैट इज मूवी एवरेज। इसमें वेरियस अदर इंडिकेटर्स भी हम लोग यूज करते हैं जो आपको एग्जिट पॉइंट बता देता है, पर क्योंकि हमारे जो आज का टॉपिक है वो ओनली इट डिपेंड्स ऑन मूवी एवरेज स्ट्रेटेजी ओनली, तो इसी में मैं आपको बताना चाहूँ तो हमको सिंपली तब एग्जिट कर देना है जब जो 5 मूवी एवरेज है, when the 5 moving average started to decline or in upward direction, like यहाँ पे 5 मूवी एवरेज ऊपर जा रहा था, जैसे ही ये थोड़ा भी बिगड़ने लगेगा या नीचे की तरफ आने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बुक प्रॉफिट, सिंपली वी आर गोइंग टू बुक प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ पे ये क्रॉस ओवर मिला, हम लोग यहाँ पे एंटर हुए, वो जब तक अच्छा चल रहा है, जैसे ही वो चीज ये 5 मूवी एवरेज उससे बिगड़ने लगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ अबाउट 5 मूवी एवरेज। जो 5 मूवी एवरेज होता है वो हमेशा जो आपके कैंडल स्टिक है उसके साथ में चलेगा इन वन डे। जैसे कि ये कैंडल स्टिक से दूर हुआ तो वो कैंडल स्टिक वापस से इसके पास में आ जाएगी, जब तक साथ में चल रहा है, जब तक चल रहा है। जैसे कैंडल स्टिक उससे काफी दूर बनी, किससे, 5 मूवी एवरेज से, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न टू इट। ये एक ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, मतलब इट इज नॉट अ श्योर थिंग, बट आप हाँ इस चीज को आप खुद भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। मतलब जब भी होगा 5 मूवी एवरेज, जैसे कि यहाँ से ये दूर हो गई तो फिर वापस से उसके पास में, तो इस तरीके से भी हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे एग्जिट होगा, कैसे कब हमको एग्जिट करना है और कब हमको ट्रेड में बने रहना है। जैसे यहाँ पे वी आर गोइंग टू एंटर एट दिस पॉइंट, हम लोग कहां तक एंटर करेंगे, हम लोग यहाँ तक एंटर करेंगे जब तक हमारा 5 मूवी एवरेज अच्छे से चले। जैसे यहाँ पे भी देखो कैंडल स्टिक से दूर हुई फिर वापस उसके पास में, हम लोग यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे। ये भी काफी पॉइंट हो जाते हैं, जैसे 24,600 पे हम लोग एंटर हुए हैं तो यहाँ पे 25,200, मतलब फॉरन एग्जाम अंदाजन 600 से 700 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो इट इज मोर देन इनफ। यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्रॉस ओवर है, यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे इंडिकेट हुआ, शेयर प्राइस नीचे थे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर। सर ठीक है, हमारे एक व्यूअर डमी क्रॉस ओवर का एक चीज यहाँ पे अच्छी देखने को मिली, ये क्रॉस ओवर था, क्रॉस ओवर ओके। जी हेलो, हमारे एक व्यूअर का एक क्वेश्चन आया है कि सेंसेक्स सेंसेक्स ऑप्शन ऑप्शन कॉल बाई है मेरा 80,000 सीई, तो क्या करना चाहिए एवरी मंथ एक्सपायरी, तो इस पे आपका क्या विचार है? no basically like sensex call, he has taken sensex call, no, basically the means we may say that the market is means due to the global issue there is a negative trend in the market, like if I put the graph of the sensex, I think it should be better that the exit position would be better, because as the market means if you talk about nifty, bank nifty, sensex, the means the market was trading at the overbought zone only, like various indicators are there like RSI and Bollinger Band, they are indicating that the market was trading at overbought zone only, and as per the technical graph the correction is expected, means it's not obvious that the correction is there and the share price and the market price is falling, so it would be better to exit as the expiry is also there, so the delta, the theta is going to, the major possibility that the premium may move towards the zero due to theta also. Any more question? श्योर सर श्योर, अभी के लिए तो नहीं है सर, फॉर नाउ इट्स देयर इज नो मोर क्वेश्चन सर। Okay. Any doubt regarding strategy or something, like if any concept like the strategy that means when to enter and when to exit and how to apply it? Any questions regarding the application of the strategy basically? नो सर फॉर नाउ अभी के लिए तो नहीं है सर। ठीक है, so let me wind it up. हाँ, basically I have taken the indicator, I have taken the moving average 5 and 20. Let me summarize it up like this and like this. What we are going to do, basically we are going to take 20 moving average as the base, and always the smaller moving average, that is the 5 moving average, is going to give it crossover.
if the 5 moving average give its crossover in downward direction, so basically selling will be indicated, and if the 5 moving average give its closing in upward direction, basically the buying will be indicated at this particular point. Now, one more thing, 200 moving average always act as an very good support and resistance level. Let me show. Moving average. I'm going to discuss about 200 moving average. Like this. Hmm. Whenever the market used to cross 200 moving average, a good buying and a good selling is indicated. It is applicable to any also, like this. The graph of the price of the Nifty 50 has given is closing about 200 moving average, and price is seen. This is 200 moving average. The moving average having the period of 200. Whenever the share price of any particular company also, whenever the share price crosses 200 moving average, it indicates buying and selling, because 200 moving average always act as an very good support and resistance. Like here also, the share price has crossed 200 moving average in downward direction and the downfall is severe. Like this, 200 moving average is crossed. Again, it is crossed. The share price is crossed above 200 moving average. Buying is indicated. The next candle is red. A sideways pattern is seen. Again, it has taken support from 200 moving average and a upward is seen here. One more very interesting thing is there. Whenever the share price crosses, for an example, let me understand, like this. A particular share price is there, like it is a level of 100. Okay, a particular share price touches the level of 100, and from the level of 100 it doesn't crosses the level of 100 and it used to come back down. Again it touches the level of 100, then again it used to come back down. Again one more time it used to touches the level of 100 and again it used to come back. What may say? We may say that the price is, or the share price is particularly facing resistance at the level of 100. 100 के लेवल पे उसको बेसिकली क्या मिल रहा है? एक रुकावट मिल रही है. ठीक है, सेम चीज हम लोग इसमें सपोर्ट में भी देख सकते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे को बताना है. अगर कोई शेयर प्राइस ऊपर से आती है, 100 का लेवल टच करती है, फिर ऊपर चली आती है, 100 का लेवल टच करती है, फिर ऊपर चली आती है, फिर टच करती है, फिर ऊपर चली आती है, मैं क्या बोल सकता हूँ? एट द लेवल ऑफ 100 द शेयर प्राइस इज फेसिंग support. 100 is the support level of it. If we talk it practically, so I may say that in case of resistance, that the selling pressure is greater than the buying pressure at the level of 100, and in case of support, I may say that the buying pressure is greater than the selling pressure. Now, if the share price level, we have to take it as 100 only. If the share price touches the level of 100, then it comes down, then touches the level of 100, then it's come down. In case it has given the crossover to the 100 level, वो शेयर प्राइस ने क्या करा? उसको तोड़ के अगर आगे निकल गई. अब अगर शेयर प्राइस वापस से नीचे आती है, तो देयर इज द चांसेस दैट इट टचेस द लेवल ऑफ 100 अगेन एंड इट विल बाउंस बैक. Till now the 100 level was resistance, and once the resistance is break by the share price, the 100 level has become support. So simply the concept of resistance and support are interchangeable. एक बार अगर resistance break हो जाता है तो वही resistance किसकी तरह एक्ट करने लगता है? सपोर्ट की तरह. सेम चीज अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो किसकी तरह एक्ट करने लगेगा? रेजिस्टेंस की तरह. ये चीज हमको यहाँ पे कहीं पे एक बार देखने को मिली.
ठीक है, यू कैन सी इट मल्टीपल टाइम्स. जब भी अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट, और बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा. ठीक है, इफ एनी डाउट इज देयर यू मे आस्क. Sir, as of now, there are no doubts from anyone. We may continue further. And if anything comes up, Okay. we can take it at the end of the session. Okay. No issue. Basically, I have discussed about 5 and 20 movie average. We may go for, there are means basically some fixed movie averages like 520. We may go for 20 and 100. I am going to return it like 5 and 20 movie average, or we may go for 20 and 100 movie average. We may also like we are using 2 movie average. We can use 3 movie average also, like 4 and 9 and 18 movie average. And 80 movie average. Now, in 5 and 20 movie average, we are going to take 20 as the base. In 20 and 100 movie average, we are going to take 100 as the base. Like in this case, at 20 and 100 movie average. So we are going to take 100 as the base, 100 movie average as the base, and the 20 movie average is going to cross 100 movie average. Okay, 100 is the base and the 20 movie average is going to cross 100. Now, if we are going to use 3 movie averages like we have discussed 4, 9 and 18. So how we are going to deal with it? Simply in this case, the 4 movie average, like this is our 9 movie average. This is a 9 movie average. This is 9 movie average. This is 18 movie average. So the 4 movie average is first going to cross on 9 movie average. Then it is going to cross on 18 movie average. And once the 4 movie averages cross the 18 movie average, now the buying and selling will be indicated. Let me show it practically. In case of using 3 indicators, we are using multiple indicators. In case of using 3 indicators, so first it is going to cross 5 movie average. First the 4 movie average is going to cross 9 movie average. Then it is going to cross 18 movie average, and after once it has given its crossover to 18 movie average, then buying or selling will be indicated. It is not allowing me to use 3 indicators. It will be same like that only. Basically, the movie average strategy is over. I think means there is not much to discuss about it. Any doubt is there? No, sir. For now, there are no doubts. Okay. So the movie average strategy is almost done. If the time permits, we may go for Dr. Alexander Elda's strategy, or we may wind up the session, as you say. Sir, I think we can go ahead for the Alexander thing also, and then after that we can. Elda's strategy. Okay. No issue. Yeah. Basically, we have till now we have discussed about the movie average strategy. In the movie average strategy, buying and selling is indicated in 2 cases. In first case, when the share price crosses any movie average, we have learned about like when the share price crosses 200 movie average or any time frame movie average. And the second one, when buying and selling is indicated when the share price, when one movie average crosses the another movie average. In this case, we are going to take the
larger moving average as a base and the smaller moving average will give its crossover to the bigger moving average in upward or downward direction. And accordingly, we are going to act or we are going to behave, we are going to buy or sell it. The another concept, or we may say a unique strategy and very accurate and important strategy, which is developed by Dr. Alexander Elder, we should go for it. Basically, the Dr. Alexander Elder has combined the concept of momentum and inertia. One word. The Dr. Alexander Elder has combined the concept of momentum and inertia, and according to the strategy of Dr. Alexander Elder, when the momentum and the inertia moves in the same direction, when momentum and inertia moves in a similar direction, it indicates us buying or selling. Let me repeat it. When momentum and inertia moves in a similar direction, जब ये मोमेंटम और इनर्शिया दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो या तो हमको बाय इंडिकेट होता है या हमको सेल इंडिकेट होता है. अब मोमेंटम के लिए इन्होंने एक मूविंग एवरेज यूज करा था, वो था MACD, और इनर्शिया के लिए एक इंडिकेटर यूज करा था, वो था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोगों ने इसमें इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में डिस्कस करा था, इसके पहले वाली स्ट्रेटेजी. ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एक्सपोनेंशियल. और इनर्शिया, basically inertia is calculated using exponential moving average and momentum is calculated using MACD. When the direction of the momentum and inertia is same, it indicates buying or selling. Okay. Now, the moving average, we have a huge discussion about the moving average. Moving average is the most used indicator. Simple moving average, exponential moving average. It is used for this all. Now, let us discuss about a little about MACD, the indicator which is used for the concept of momentum by Dr. Alexander Elder. Simply, the moving average, like this is the graph of any company. The moving average is drawn, or the moving average is applied on the graph itself. MACD is applied downside the graph. Like here the MACD will be applied. In MACD there are two lines, long and short. Let me practically show it. Like this. MACD is, this is MACD. The blue line is long and the orange line is short. Now, how to apply it? I have discussed about one thing, that the Dr. Alexander, according to Dr. Alexander Elder, when the direction of the momentum and the inertia is similar, जब momentum और inertia एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमको क्या इंडिकेट होता है? सेलिंग या बाइंग इंडिकेट होता है. अब कौन सी क्या डायरेक्शन है हम लोग उसको देखते हैं. हाँ, ये सब चीजों को एक बार अच्छे से नोट कर लेना. हम लोगों ने इनर्शिया को किससे हम लोग वो कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और मोमेंटम को हम लोग देख रहे हैं MACD से. नाउ if exponential moving average and MACD moves in upward direction, both exponential moving average and MACD moves in upward direction, buying is indicated. Buying is indicated. And when exponential moving average and MACD moves in downward direction, basically selling is indicated. When exponential moving average and MACD is
moves in downward direction, selling is indicated. Let's quickly move to the practical part. Like this. हाँ, एक और चीज, जो हमारा मूविंग एवरेज, जो हमारा मूविंग एवरेज होता है वो ग्राफ पे लग जाता है. जैसे ये मूविंग एवरेज हमारा ग्राफ पे लग गया, जो एमएससीडी होता है वो नीचे होता है, ग्राफ से नीचे एमएससीडी. अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था जब एमएससीडी और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो या तो बाइंग इंडिकेट होगा या सेलिंग इंडिकेट. उसके आगे हम लोग बढ़े और फिर मैंने ये बोला कि जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड एमएससीडी जब डाउनवर्ड, जब नीचे के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या इंडिकेट होगा, सेलिंग इंडिकेट होगा. यहाँ पे हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो मूविंग एवरेज था वो क्या था, इट वॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से मैं ठीक अगर नीचे आऊंगा तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा एमएसडी भी क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग. हियर व्हाट इज इंडिकेटेड, बेसिकली सेलिंग इज इंडिकेटेड. इट इज वेरी स्ट्रेटेजी टू. ठीक है, जब हमारा एमएसडी, यहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, हमने मूविंग एवरेज को देख लिया, उसी टाइम पे जो हमारा जो हमारा एमएसडी था वो भी क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था. तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग इंडिकेट हुआ. हम लोग यहाँ पे बेसिकली सेल कौन से पॉइंट पे कर देंगे, हम लोग यहाँ पे इसको सेल करेंगे. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग सेल करेंगे. कहां तक का हमारा टारगेट होगा, हमारा टारगेट होगा बेसिकली, इसको मैं देख के बताऊं तो करीब करीब यहाँ तक हमारा, यहां से मैं देखूं तो अंदाजन 25,600 से हमने करा, 24,300, 2,000 पॉइंट का हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है. हम लोग 2,000 पॉइंट का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं. अब इसको हम लोग और भी दूसरे उसमें देखते हैं, एक दो बार इसको हम लोग और अप्लाई करते हैं. जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा जो एमएससीडी था इस पर्टिकुलर पॉइंट से मेरा जो मेरा जो मूविंग एवरेज था वो क्या था, इट वाज अपवर्ड स्लोपिंग. इस टाइम पे, इस दौरान ही, उसके टाइम पे मैं क्या करूंगा, ठीक नीचे आ जाऊंगा. ठीक, मैं यहां से नीचे आया, उस टाइम पे मेरा जो एमएससीडी था वो भी क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग था. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय करूंगा. यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा. कब एग्जिट करना है वो चीज में हम लोग आगे इस चीज को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, एमएससीडी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था. यहाँ पे हम बहुत टैलेंट, एक दो बार अपन इसको और देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमको व्हेन वी हैव टू एग्जिट एंड व्हेन वी हैव टू एंटर. Like this. At this point, यहाँ पे मेरा जो मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो क्या है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. ठीक इसी टाइम पे जो मेरा एमएससीडी है वो भी क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग. मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई एम गोइंग टू बेसिकली बाय इट, इसको सेल क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा. ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, उस सब चीजों में किसी को कोई डाउट है, when we have to buy, when we have to sell, when we have to wait, anything. तो मैं ये देखूंगा कि अब नेक्स्ट में बताऊंगा कि हमको एग्जिट कब करना है इसमें. सिंपली when we have to exit it. जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखें तो क्या हो रहा है. Questions, you can ask the questions to them. So as of now, sir, there are no questions from the viewer, but I request to all of the viewers, those who are right now available, please ask whatever your queries are there related to this, and so that sir can have it done. Yeah, so sir, you can continue for now. I think none of them are having any concern. Yeah. So we can at this point also, like, okay. At this point, the moving average is upward sloping.
our exponential moving average is upward sloping. At that particular time frame, our MACD is also upward sloping. What is indicated here? Simply buying is indicated at this point. Buying is indicated at this point, and we are going to capture a huge points. Okay, we are going to capture a huge moment, I mean say. Okay. Now the major question, once we have enter the strategy, or once we have entered any trade, when to exit it. Now, simply when the MACD, the lines of the MACD start to intersect each other, it is the most accurate time to exit your position. I will repeat it. When the two lines of MACD starts intersecting each other, जब MACD के दोनों लाइन आपस में टकराने लगे, वो सबसे सटीक समय होता है हमारा ट्रेड को क्लोज करने का. जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, वी विल एंटर हियर. हम लोग जैसे ही ये आपस में पास में आने लगे, उसको एग्जिट कर दें. कितने पॉइंट का हमको गेन होगा, अंदाज से हम 22,900 पे एंटर होंगे और 24,500 अंदाज, चलो 24,500 पे हम लोग क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे. 600 पॉइंट का हमको यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करने को मिलेगा. ठीक है, एक दो बार मैं और बताता हूँ जहां पे मैंने बताया था. जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली वी आर सेलिंग इट. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे. एग्जिट कब करेंगे, हम लोग एग्जिट तब करेंगे व्हेन द लाइंस ऑफ द एमएसीडी स्टार्ट टू इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उसको सेल कर देंगे. वो जो लेवल्स बनाए थे अपने वही था. यहाँ पे भी हमको 600-700 पॉइंट्स के मोमेंट कैप्चर करने को मिलेगा. सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा. जैसे ही लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, ये ऊपर तक जाएगा. ठीक है, हाँ, बहुत सी बार क्या हो सकता है वो लाइंस इंटरसेक्ट जैसे ही बिगड़ने लगे, जैसे यहाँ पे येलो ब्लू लाइन के नीचे आने लगी, हमको लगने लगा कि द लाइंस आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, द टू लाइंस ऑफ MACD आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. इट्स एन प्रॉपर इंडिकेशन दैट इट्स अ टाइम टू एग्जिट. ठीक है, सेम चीज हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, एंटर कर सकते थे. आज से मतलब 16 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते थे जब 23,300 था, और हम लोग क्या करते हैं इसको 24,300 तक, मतलब 1,000 पॉइंट का यहाँ पे हमको, अभी 16 अप्रैल को भी हम लोग एंटर करते तो 1,000 पॉइंट का हमको यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करने को मिलता. जैसे ही जो ये ब्लू लाइन थी वो वापस क्या होने लगी, द लाइंस आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, ये टाइम हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं. ठीक है, हाँ, एक चीज, I have taken the time frame of one day. You can apply it for the 15 minutes, but yeah, accuracy is more at one day. The one day time frame is better to use one day time frame only. It is for positional trading. If you want to do intraday trading, you can use the time frame of 15 minutes. I have applied it in Nifty 50. You can apply it to any index or any share price also. The strategy works as it is at every index or at every stock price, on every stock graph also. Okay. Let me wind it up. Basically, Dr. Alexander Elder has combined the concept of momentum and inertia. According to Dr. Alexander Elder, when the momentum and the inertia moves in a same direction, buying and selling is indicated. When inertia and exponential moving average moves in upward direction, both moves in upward direction, buying is indicated. When inertia and momentum both moves in downward direction, basically selling is indicated. We are going to check momentum with the help of MACD and inertia with the help of exponential moving average. How to practically apply it, we have seen. Any doubt regarding crossover strategy or Dr. Alexander Elder strategy, or we are going to end today's session? Yeah, so viewers, if you have any kind of a query, whatever, like the sir has given us a very good aspects upon the trading, and even though the Alexander view also, and even though he has shown many graphs for the Nifty and all.
So if you guys have any kind of a query, please feel free to ask him. We are still available. Sir, I think there are no queries Yes. for now. So if you want, we No can. issue. No issue. So if you want, मतलब इसको वाइंड अप भी अभी कर सकते हैं अगर आपको कुछ और एस्पेक्ट्स आपको कवर अप करने हो. No, I am done with it. This, almost everything is done. श्योर Everything श्योर is श्योर done. श्योर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर आज आप आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को भी वैल्यूबल टाइम दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, Anupam sir package is available on Pickrite website, the one which is hosting the live event today. So you can go to the trading section in the Pickrite application, and in that you can search for in the equity and FNO. He is having a package in equity and FNO as a bank nifty and nifty options. As as अभी के लिए आप सभी व्यूअर्स के लिए फ्रॉम पिकराइट एंड आप सभी को 3 days का फ्री ट्रायल हम लोग ऑफर करते हैं. आप लोग जाइए पिकराइट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए. ट्रेडिंग सेक्शन में इक्विटी एंड एफएनओ में आपको अनुपम सर का ट्रेडिंग पैक दिखेगा जिसका नाम है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑप्शंस. उसको आप सब्सक्राइब करिए 3 days के लिए. एंड and thank you so much for joining today in today's session. Thank you, Anupam sir. We'll definitely Thank you. do this kind of a session more and more again so that our viewers can get much more things on that. Sure, sure. Sure, sure. Okay, sure, sure. Thank you, Okay. sir. Thank you for your time. Thank you. Thank you.